Hi everyone. I'm again back sharing my point of views, sharing my experience as a parent to a child on the spectrum. And if you are one of those parents who are also walking the similar, path or are on autism spectrum journey or a related mental health issue, be it, you know, be it ADHD or intellectual disability or ASD, anyways, we are talking about. Yeah, so if you are that parent who is also walking the similar path as I am too walking, I too am. I'm back. I just got paused. Yeah. So if you are also a parent walking the similar path, then hear me out, listen to me, just for give me some time and see what not to do as a parent to a child on the spectrum. Because many times we are always facing a challenge, what we should do to bring more success or more thriving into our child's life, right? यही सोचते हैं ना हम लोग, क्या सब कुछ कर सकते हैं जिससे हम अपने बच्चे की लाइफ में बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो सके, राइट? दिस इज व्हाट वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट एंड वी आर टॉकिंग नॉट टू एनीबडी बट वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्व्स कि अब नेक्स्ट क्या करना है, अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे क्या करना है. अब इस भाग दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, राइट? कभी हम ये नहीं सोचते कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हमने ध्यान रखना है और जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, राइट? उनमें से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्पेशली इवन आई एज अ पेरेंट व्हेन माय चाइल्ड वाज डायग्नोस्ड, मैं भी ये गलती करती थी एंड आई गिव अप मे बी इन द मिडल ऑफ द जर्नी व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई हैड कंप्लीटली एक्सेप्टेड हिम फॉर हु ही इज, राइट? तो let's not make a mistake of comparing our child with any of the sibling or their regular classmates or, any other child who might not be suffering or facing the challenges which our child is facing. तो बहुत जरूरी है इस बात का ध्यान रखना कि हम अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर ना करें, ना ही उसके अपने बहन भाई के साथ और ना ही उसकी क्लास में जाने वाले उसके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो रेगुलर हैं उनके साथ भी नहीं, और जो बच्चों को चैलेंजेस हैं ऑलरेडी, राइट, लाइक दे आर ऑल्सो ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, वो भी दूसरे बच्चे भी अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में हैं तो क्या हम उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं. कैसे करेंगे? क्योंकि हमें, पहली बात है, हमें अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, हमें अपने बच्चे की चैलेंजेस के बारे में जानकारी नहीं है, राइट? तो जो मेरा बच्चा ऑन द स्पेक्ट्रम चैलेंजेस फेस कर रहा है वो बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं. तो क्या ये ठीक रहेगा कि हम उसको अपने भाई बहन के साथ जो न्यूरोटिपिकल हैं उनके साथ कंपेयर करें, या उनके साथ जो भी ऑटिज्म में है, राइट? और हम इतना तो हमें पता ही है कि कोई भी दो बच्चे एक बराबर एक समान लगते ही नहीं है, राइट? और हम भी थे, लाइक माय ब्रदर, आई हैव अ ब्रदर, राइट? मी एंड हिम आर एब्सोल्युटली अ डिफरेंट पर्सनैलिटीज, राइट? सो नो टू चिल्ड्रन इवन born from the same parent are alike. Then how can we compare two children born to different parents in different situations with different challenges on the spectrum itself to compare, right? So ये जो unnecessary comparison है, let's just finish this, right? And कभी कभी क्या होता है कि बहुत देर लग जाती है हमारे को ये बात समझने में. So इसलिए पहले से ही I wanted to tell कि हाँ, मुझे टाइम लगा, मुझे एटलीस्ट 3-4 years लग गए ये समझने में कि मुझे किसी के साथ उसको नहीं कंपेयर करना है. मैं कंपेयर इसलिए करती थी देखने के लिए कि वो कहाँ लैकिंग कर रहा है, राइट? इसलिए I used to compare him to a regular child without completely understanding what exactly autism is looking like, है ना? बहुत टाइम लग जाता है समझने में अपने बच्चे को, अपना जो भी
चैलेंजेस हैं। एक वर्ड में हम बहुत कुछ बोल देते हैं, पर उस वर्ड की गहराई जब हम उस जर्नी पे चलते हैं तब समझ में आती है, राइट। सेंसरी सेंसिटिविटी, बहुत कोई बात कर रहा है सेंसरी सेंसिटिविटी के बारे में, लेकिन उसकी गहराई कहाँ तक है, मेरे बच्चा कहाँ तक अफेक्टेड है, ये समझने में टाइम लग जाता है, राइट। सो फर्स्ट थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर our child with any other child, regular, be it regular, be another child on the spectrum, right? First thing is we give up the comparison. Yes, when we are starting our journey, we can note down our children's challenges, and then we can keep on ticking. We overcame that challenge. So we are only comparing our child with their own, they themselves, how much they have improved from the time 0 to the time whatever, right? Like after walking this path and making some changes, so 6 months down the line, I compare with what my child was to what he is now, right? So that's very, very important. No comparison. Another thing is, don't ever ignore the sensory requirements of your child. ठीक है, अगर आपको वो बच्चा दिखा रहा है कि उसे स्पिनिंग टॉयज अच्छे लगते हैं, और आपको ये लग रहा है कि ये बिहेवियर सही नहीं है, राइट, या कोई उसकी सेंसरी सीकिंग है, राइट, द चाइल्ड इज सीकिंग जंपिंग, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, राइट, यूज इट एज अ रीइंफोर्समेंट, राइट, गिव देम जंपिंग, डोंट लेट देम गेट ऑब्सेस्ड विद इट, ठीक है ना, बट इग्नोर मत करो। ये नहीं है कि वो उसको जंपिंग अच्छी लग रही है, वो सोफे पे जंप करता है, वो बेड पे जंप कर रहा है, तो टेल हिम द राइट प्लेस टू जंप, गेट अ स्मॉल ट्रैम्पोलिन, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल, लेट्स नॉट क्योंकि उसको वो मूवमेंट सीकिंग है, राइट। सो इस मूवमेंट में जैसे जंपिंग है, लिफ्ट में जाना, जैसे रना को बहुत ही अच्छा लगता है लिफ्ट में घूमना, एंड एनी मूवमेंट जो अगर उसको पसंद है, तो let's not ignore it. Give the child what the child is seeking, right? अगर बच्चा कुछ स्मेल करना पसंद कर रहा है, बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस इकट्ठी कर दीजिए, राइट। सो सेंसरी नीड्स, और अगर किसी चीज से वो अवर्सिव है तो उसको बहुत धीरे धीरे वी विल इंक्लूड इट, राइट। सो नेवर इग्नोर देयर सेंसरी रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज उनका जो नेचुरली हम लोग भी पूरे सेंस की वजह से ही इस दुनिया में वी आर लर्निंग, राइट, और उनकी भी दुनिया जो है इसके इर्द गिर्द ही घूमती है, इट्स गोइंग अराउंड द सेंसरी इनपुट्स दे आर गेटिंग, राइट। इफ दे आर सीकिंग समथिंग, लेट्स गिव देम इन द राइट वे, राइट, इन द राइट अमाउंट, राइट, यू कैन यूज इट एज अ reinforcement. If they are aversive of certain things, then there are strategies to bring those things also in, but in a very, very structured manner, so that we don't overwhelm them. ठीक है, so ये understand करना बहुत important. So first was don't compare. Second was let's not ignore their sensory needs. Then don't focus only on the deficits, thinking only about their challenges and not considering their strengths. It's not, is it a good thing to do? No, right? So don't just keep on making a list of problems. See what all the child is able to do, right? Then you will be able to appreciate their efforts and even your efforts, because you as parent are also, working equally hard to let the child thrive, right? So let's focus on the strengths and don't keep focusing on their deficits, right? Deficits तो anyways अपने आप को manifest करके हमें दिखाई रहे हैं, right? And when we are trying to heal our children, when they are toddlers or they are less than the age of 5, और हम लोगों को क्या है कि सब किसी ने कहीं पे लिख दिया, क्योंकि मैनुअल तो है नहीं ना कि कैसे बड़ा करना है अपने बच्चे को, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, तो कोई मैनुअल नहीं बन पाया, राइट। लेकिन भगवान ने हमें एज अ पेरेंट, उनको अगर हमें ऐसा बच्चा मिला है तो हमें अपने आप को एम्पावर करना बहुत बहुत
जरूरी है, राइट? एंड जब हमारा बच्चा, और मैनुअल नहीं है तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन अराउंड ऑटिज्म भी अवेलेबल है, where they say that brain is developing within the period, there is a period, there's a golden period of 2 to 5 years or 7 years, and if you do as much during that time, you will see a lot of improvement in your child. जब हम वो टाइम फ्रेम में अपने आप को डालते हैं, जो कि मैंने गलती करी, और मैंने भी अपने आप को टाइम फ्रेम में डालना स्टार्ट किया, then what happens is we overwhelm ourselves, we overwhelm the child, and we start pushing too hard and too fast. We want to bring in everything for the child. हमें लगता है जल्दी जल्दी ठीक करना है, 5 साल तक ठीक हो जाएगा, राइट? 5 साल में हम उसको मेन स्ट्रीम स्कूल में डाल देंगे, राइट? 5.5, 6 years. तो कभी कभी उस टाइम फ्रेम को पकड़ने की कोशिश करने के लिए हम लोग अपने बच्चे को, वी पुश देम टू हार्ड, वी ट्राई टू डू थिंग्स टू फास्ट, है ना? फोर्सिंग therapies, changing maybe food or diet, social situations, without considering whether the child is even ready for all this. And did we as children do so many things? We were just enjoying sleeping whenever we wanted to sleep. When we were 2, 3, we were having all the fun. We didn't have the pressure of running from pillar to post, from therapy to therapy, did we? And should we do that with our children? Of course, we should have that consideration, right? I was also trying to push all those things in that window of 2 to 5, 6, 7 years, and I overwhelmed myself, maybe. And then Ranak wouldn't be cooperative in the therapies, right? And that gives me further more stress. So don't do that, right? And let me assure you that improvement can happen anytime. Okay? Yes, early intervention helps. It helps a lot because we can shape the clay that we have. जो गीली मिट्टी हमें दी है भगवान ने, अब वो शेप हो रही है, उस वक्त अगर हम काम करते हैं तो naturally we can give a proper shape. But I have seen so much improvement even after that window. And rather, maybe I worked hard in that time, but the result started coming only later. By 9, 10 years, I started getting improvements in him. He's 16, I still get improvement. Okay? So that, again, another pressure, remove it from your shoulders, also from your child's shoulder. Don't dismiss your gut feeling. Okay? This is my 5th point. Don't ever dismiss your gut feeling. Parents always sense what is right for them, for their children, right? If something is off, maybe whether it is food or environment or certain therapy, don't let experts or therapists silence your intuition or your instinct. Because जितना connected हम होते हैं अपने बच्चों के साथ, इसलिए कोई हमें ये नहीं बता सकता कि आपका बच्चा ये नहीं कर पाएगा, right? So don't listen to all that. Go by your instinct. And एक जो बिलीफ का एक बीज है अपने अंदर घुसा लीजिए. हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है. Alright? And don't let any expert come and tell you that your child will not make to mainstream school, your child will not be able to write, your child will not be able to speak. Don't go. Don't go by those things. Go by your own gut feeling. ठीक है? कोई बहुत कुछ जानकारी मिल रही है हर जगह पे. Go with your gut feel where you feel comfortable. You feel, yes, this will work for my child. Okay? Another point, right? Then don't use punishments for meltdowns. ठीक है? So we are talking about what we are not supposed to do. Punishment नहीं कर सकते हम. क्यों नहीं कर सकते? बच्चा इतना misbehave कर रहा है, he's all over the floor, he's crying, screaming, yelling, pulling me, all those things are happening. And I don't know how to handle all that. So that's why we need to understand their sensory, what are their sensory needs, right? And once we understand what exactly is a meltdown is when the child loses control on himself or herself. And now the child is on the floor.
ओके, और वो क्या ट्रिगर किया था बच्चा भी भूल जाता है. ऑलराइट, सो should we, in this case, something really troubled him and the child lost control, should we also lose control on ourselves, or should we be in control of the situation by controlling our emotions and our response? Okay, we are not going to react like I want to give you punishment or no more malls for you. You know, like Rana ke liye aise hota tha. Rana would be on the floor and people will glare, people will do whatever. Let them think, let them make opinions. Such opinions should not bother you, and their stare should not bother you. You just need to be calm and take your child in a beautiful hug, and take the child to a silent corner or a safe corner where the child starts feeling much happier, right? So we are not going to punish. No hitting your child. मारने पीटने से कुछ नहीं होने वाला, और बढ़ जाएगा, बिकॉज बच्चे को तो वैसे ही नहीं समझ आ रहा कि क्या ट्रिगर कर गया, राइट? और उन्हें जैसे हमें नहीं समझ आ रहा ना उनकी दुनिया कैसे है, उनको नहीं समझ आ रहा हमारी दुनिया कैसे है, क्योंकि उन्होंने तो वैसी दुनिया महसूस ही नहीं करी ना, राइट? अब हमारे लिए कुछ स्मेल्स ठीक है, राइट, पर हमारे बच्चों के लिए वो स्मेल्स बहुत ज्यादा हो गई. दे कांट टॉलरेट दो स्मेल्स, राइट? और अ टेक्सचर और अ साउंड और अ क्राउड, टू मच ऑफ अ स्ट्रेंज प्लेस, इट इज ओवरवेलमिंग फॉर देम. बिल्कुल उनका सेंसेस जो है, इतना सारा इनपुट आ गया कि अब वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे. अब प्रोसेस नहीं कर पा रहे इसलिए वो रो रहे हैं. और रोने का मतलब क्या है, या मेल्ट डाउन करने का मतलब है कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैं किसी चीज से कंफर्टेबल नहीं हूं. अब उसमें हम उसको और अनकंफर्टेबल नहीं बना सकते, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू यूज एज अ कंट्रोल ऑफ देयर टैंट्रम्स और देयर मेल्टडाउन्स, ठीक है? एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट anything that you do, don't think that it is going to be a quick fix. ठीक है? कोई इंस्टेंट क्योर है, और क्योर है, हीलिंग हो सकती है, but it is going to take time. So don't go by if somebody is promising something, it will happen quickly. What I have seen in the autism journey is you need to have a lot of patience. Okay, and it takes a while for something to work and start showing results. Supposing you go to speech therapist, 3 महीने हो गए बच्चा नहीं बोल रहा, और 3 महीने हो गए आर्टिकुलेशन ठीक नहीं हुआ, give them more time. They need more time. ठीक है? So don't go for a quick fix kind of a thing. Then it's very very important not to ever neglect your own health. It can be physical health, and this physical health is basically connected to the mental health, है ना? तो जहां पे आपको फील हो रहा है कि ओवरवेलम हो रहा है या बहुत हो रहा है, यू आर रनिंग पिलर टू पोस्ट, यू आर ट्राइंग टू मेक changes when it comes to diet, and you're trying to handle many things, and it is affecting your mental state, right? तो उसको इग्नोर नहीं करना है, right? जितना इंपॉर्टेंट हमारे बच्चे हैं उतना इंपॉर्टेंट हम खुद हैं. कभी कभी हम अपने आप को भूल जाते हैं, और ये गलती मैंने भी की थी. और उसके बाद क्या होता है कि बस एक टाइम आता है जब बर्न आउट हो जाता है, राइट? और जब वो बर्न आउट हो जाता है, देन पहले बहुत सारा काम कर लिया, अब मैं एकदम बेड पे, राइट? एंड देन हु सफर्स? द चाइल्ड सफर्स, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी चाहिए ना बच्चे को, वो तो नहीं दे पा रहे हम, बिकॉज वी डिडंट टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, राइट? एंड ऐसी सिचुएशन ना आए, राइट? सो टेक ब्रेक्स. बीच में ब्रेक लेना अच्छा है, वीकेंड पे बाहर घूमना अच्छा है. एंड what I have seen is that, one of us used to take a break. Either my husband will go out with his friends, or I'll go out with my friends. Or sometimes when Ranak is gone to school, those times we will just go and have a, lunch date. Barabar hai? We need to spend time with family. We need to spend time with each other as well. है ना? So ये सब छोटी छोटी चीजें करने से we can take care of our mental health. And yes, the best way to take care of your mental health is do some exercise. Either you join a gym or you join yoga. Yoga तो आसान है ना? So yoga कर लेना, थोड़ी breathing exercise कर लेना बहुत ज्यादा helpful है.
And because I have been through phases of burnout, then, I go back to my energy, and how I handle with my energy is what, I'm trying to tell, right? How I healed myself to heal my son, right? So it's like, first I need to be in that, I need to fill my cup to be able to pour into my child's cup. Okay? So uske liye, I need to take care of my energy levels, my motivation, my enthusiasm to work with my child. ठीक है, इसलिए अपने आप को, अपने आप की हेल्थ, अपने आप, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, दोनों चीजों का ख्याल रखना है हमें। एप्रोप्रिएट रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके लिए दोनों, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके एक दूसरे का ख्याल रखें तो बहुत सही है, राइट। एक के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो लेट द हस्बैंड वॉक इन, राइट। टुडे आई विल टेक द चाइल्ड फॉर थेरेपीज, टुडे आई विल टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड एंड यू टेक अ रेस्ट, राइट। It's very important, right? And then don't isolate yourself. Very important. ठीक है, ना ही isolate करने का मतलब है अपने फ्रेंड से अपने आप को isolate कर लिया। अब क्या है कि फ्रेंड्स ऐसी जगह होती है जहां जब हम फ्रेंड्स के बीच में बैठते हैं आधे से ज्यादा स्ट्रेस फिनिश हो जाता है, राइट। वी आर हैविंग फन, वी आर टॉकिंग एंड वी कैन ऑल्सो अपना दिल हल्का कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं। Or not only isolation from your friends, but also be in touch with the parents who have walked this journey, how they were able to overcome all those challenges which you are maybe facing at the time, right? तो उनसे भी अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है। जितना खुल के बात करेंगे, जितना प्रॉब्लम किसी के साथ अगर डिस्कस करेंगे भी, अगर कोई पेरेंट है, आपको अच्छी ही एडवाइस मिलेगी। इट्स लाइक पेरेंट टू पेरेंट टॉकिंग, है ना। सो मतलब हम भी उन अंगारों पे चल चुके हैं और अब हमें पता है कि आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, राइट। लाइक एक्सपीरियंस पेरेंट कैन टेल अ पेरेंट हु इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ और स्टिल वॉक्ड, बट मे बी आई माइट बी अ 2 step ahead of you and maybe I can guide, right? So be in touch with parents with similar journey. Also, be in touch with your old friends. Don't isolate yourself. It's very important, right? Then, when we are walking this journey, this is the last point I want to discuss, is that don't get too much into labels. ठीक है, मेरा बच्चा ऑटिज्म भी है या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है या कुछ पीडीडी है, नो एस समथिंग होता है ना, डेवलपमेंटल डिले है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, ऑटिज्म है, एडीएचडी है। फॉरगेट द लेबल्स, थिंक अबाउट योर गोल्स, वर्क ऑन देम, फिनिश इट, ठीक है। एंड नेवर फॉरगेट लेबल्स, योर चाइल्ड इज नॉट अ लेबल, ठीक है। And your child doesn't become their diagnosis or the label that doctor has given. Your child still is a child, and so always have that love. So don't forget this thing, that after all, let people make any kind of judgments they want to make. Let that judgment, and you also don't keep going after labels and waste your time, right? Because you're wasting your child's time as well. Because हम label ढूंढ रहे हैं, उस हिसाब से हम therapy ढूंढेंगे. No, we will find out the correct requirement by observing the child, by observing the challenges rather than the labels. So don't run after the labels. So I hope today I was able to, bring to the forum, to the table, things that we as parents need to avoid, and things that we as parents have to give up, ठीक है। और ये सब करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है that we have to bring in acceptance, right? Not only of the diagnosis or the label, but acceptance that yes, there are challenges and there is nothing to be embarrassed about, like in the beginning, people are, especially when their children are small, they think that, okay, our child will be able to overcome. I don't want to share the label or diagnosis with anybody, right? People will make judgments of me. Why? Is this something that we invited? Is it our fault?
No, no. Then what is the use of becoming or feeling embarrassed? There is nothing to be embarrassed. And if people want to talk behind your back, they are welcome to do. Anyways, you cannot stop anybody from talking or gossiping, and let these things do not affect. Let these things not affect you. Right? So once you are so strong within yourself, people will completely forget talking about you like that, because you so strongly believing that yes, we are working on it and then we will be able to overcome. Yeah. And that's how people will start looking at our children. So I feel the way you look at your child, people will look with this similar perspective to your child. I have seen this happening with me, and that's why I'm sharing. It's not that, I've read it somewhere or I have experienced it, because I treat my child with respect, and hence the society is going to behave like that, right? It's we, the parents, who will bring that respect for our children. Yes. So with that, I hope I could bring in some tips for being a parent to a child on the spectrum, or, a global developmental delay, or ADHD, or all those labels. So I don't go for the labels. Level 1, level 2, level 3, we will cross all the levels. Okay. So, but just be very firm and accept your child the way or who they are, and love as much as possible. Yeah. That I don't need to tell. Yes. Okay. Bye-bye. Have a lovely evening ahead. And if you do want to remain in touch with me and hear me out of what I did to bring so much of healing to my son, then you are welcome to join my masterclass that's happening on Friday, 5 p.m. And see you on that side. Let's hear me talk and let you know what all things I made changes to bring healing to my son. Yeah. Bye-bye. It was very nice talking to you all. Bye-bye. See you.